Hello students, here is chapter number 2, acids, bases and salts, and we will discuss 20 multiple choice questions in this video. Question number 1. What treatment will you suggest in case of acidity? If anyone has acidity, तो हम यहाँ vinegar, orange juice and lemon juice suggest नहीं करेंगे because they already contain acid. But we can suggest baking soda water because baking soda is basic in nature and acid के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है. So correct choice is D, mark D. Question number 2. Choose the correct statement. Statement A देखिए, नाइट्रिक एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. कोई भी एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड. स्टेटमेंट बी, एसिटिक एसिड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. एसिड रेड लिटमस को ब्लू नहीं करता, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सी, सोप चेंजेस कलर ऑफ स्पॉट्स ऑफ करी ऑन वाइट क्लोथ्स टू येलो. दिस इज रॉन्ग. कपड़ों पर करी के स्पॉट्स में टर्मरिक होता है जो एक इंडिकेटर का काम करता है एंड सोप में प्रेजेंट बेस के साथ ब्राउनिश रेड कलर देता है, ना कि येलो. नाउ कम टू स्टेटमेंट नंबर डी. देर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑन रेड लिटमस. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस which changes red litmus to blue. So, out of 4 statements, statement A is correct. Mark A as a correct answer. Question 3. The gas formed by reaction of zinc and dilute sulphuric acid. Diagram देखिए और point number 1 को note कीजिए. जब zinc granules dilute sulphuric acid से react करते हैं तो hydrogen gas बनती है and this gas is, now see the option A, heavier than air. No, this gas is lighter than air and it rises up in the atmosphere. यह गैस ऊपर की ओर उठती है because it is lighter than air. Now come to point B. It forms air bubbles in soap water. This you can see in diagram at point number B. यहाँ soap bubbles filled with hydrogen gas निकलते हुए दिख रहे हैं. So this is correct statement about hydrogen gas. Come to point C, helps in burning. This is wrong. डायग्राम में नोट कीजिए पॉइंट C पर. जब बर्निंग कैंडल गैस के पास लाई जाती है तो वह बुझ जाती है, बट द गैस इटसेल्फ बर्न्स विथ पॉप साउंड. सो इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग बट इट बर्न्स इटसेल्फ. इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस. कम टू पॉइंट D. It is basic in nature? No. This gas is acidic in nature. So, point B, that is, it forms air bubbles in soap water, is correct about the gas formed by reaction of zinc with dilute sulphuric acid. So, mark B as a correct answer. Question 4. Which one will not react with zinc to form hydrogen gas? Zinc के साथ both acids and bases react कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बट सॉल्ट्स जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते. सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे कैन रिएक्ट विद जिंक एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बट कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट एंड कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद जिंक. सो आंसर इज डी, मार्क डी. क्वेश्चन नंबर 5. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ए देखिए, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. दिस इज करेक्ट. एसिड्स का टेस्ट सॉर होता है. कम टू बी स्टेटमेंट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यू कैन सी द टर्निंग ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड बाय एसिड्स इन लोअर डायग्राम. कम टू सी स्टेटमेंट, बेसिस आर स्वीट इन टेस्ट. इट इज रॉन्ग. Bases are bitter in taste and they are not sweet in taste. D statement, bases turn red litmus blue. This also you can see in lower diagram. Base red litmus को blue कर देते हैं. So wrong statement among 4 is C. Bases are sweet in taste. Mark C as a correct answer. Question 6. Dilute hydrochloric acid on reaction with metal oxide
gives green color solution. This metal oxide is, आप नीचे रिएक्शन को देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बनाता है and this gives green color to the solution. So, the name of metal oxide which gives green color solution on reacting with hydrochloric acid among 4 is copper oxide, which is given in option D. So, mark D as a correct answer. Question number 7. Match column 1 with column 2. Column 1 में कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला दिए गए हैं एंड कॉलम 2 में इन कंपाउंड्स के नेम्स हैं, आपको इन्हें मैच करना है. कॉलम 1 नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 with 10 water molecules. It matches with D, washing soda of column 2. Point 2 column 1 it is CaSO4 calcium sulphate with half water molecule. It matches with A, plaster of Paris of column 2. Now 3 point column 1 it is NaHCO3 sodium hydrogen carbonate which matches with B, baking soda of column 2. Now come to 4th point column 1 CaOCl3 it is calcium oxychloride and it matches with C of column 2 bleaching powder. So correct option is number 1. First matches with D, second with A, third with B and fourth with C. So mark number 1 as a correct answer. Question 8. Choose the correct statement. Statement A देखिए, limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. This is correct. All three are different forms of CaCO3 means calcium carbonate. Now come to statement B. When calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid, carbon dioxide gas is formed. This is correct statement. नीचे डायग्राम में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है जो जार में कलेक्ट की जा रही है. नाउ कम टू स्टेटमेंट सी. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की when carbon dioxide gas is passed through it. This is also correct. Lime water calcium hydroxide CaOH whole twice होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जो मिल्की अपीयरेंस देता है. You can see it in lower diagram and also you can see equation of this reaction. So all statements are correct. So correct answer is D. Mark D. All of above. Question number 9. Which of the following solutions can conduct electricity? वही solutions में से electricity conduct हो सकती है जो water के साथ ions बनाते हैं. Diagram में देखिए, dilute hydrochloric acid beaker में present है and bulb on हो रहा है. Second beaker में देखिए, यहाँ beaker में glucose solution है but यहाँ bulb on नहीं हो रहा. So out of 4 solutions, solution 1 water and glucose and solution 3 water and alcohol, they cannot conduct electricity because they do not form ions in water, while solution 2 water and hydrochloric acid and solution 4 water and sodium hydroxide, they can conduct electricity because they can form ions in water. So correct choice is C. Second and fourth, mark C as a correct answer. Question number 10. Enamel of teeth is made of? It is made of calcium hydroxyapatite, which is a crystalline form of calcium phosphate. So correct answer is C. Enamel of teeth is made of calcium hydroxyapatite. So mark C as a correct answer. Question number 11. Match column 1 with column 2. First, curd, sour milk of column 1. It matches with C. Lactic acid of column 2. कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. सेकेंड, एंड स्टिंग ऑफ कॉलम 1. इट मैचेस विद डी. मिथेनोइक एसिड ऑफ कॉलम 2 मीन्स ant sting contains the acid called methanoic acid. Third, tomato of column 1. It matches with A. Oxalic acid of column 2 means tomato contains the acid called oxalic acid. Fourth,
tamarind of column 1, it matches with B, tartaric acid of column 2. Tamarind contains the acid called tartaric acid. So, correct option is C. 1 matches with C, 2 matches with D, 3 matches with A and 4 matches with B. So, mark C as a correct answer. Question 12. Choose the correct statement. Statement A. Strong acids give more hydrogen ions. This is correct. जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे एसिड में से उतना ही वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और pH टुवर्ड्स 0 की ओर होगा. So this is the correct statement. Now come to B. pH of gastric juice is 1.2. This is also correct. Gastric juice is secreted in stomach and it has pH which is equal to 1.2. Now come to C. The pH of neutral solution is 7.0 and pH of basic solution is more than 7.0. This is also correct statement. pH स्केल को देखो, अगर pH 7 से कम है तो वह solution acidic है, अगर pH 7 है तो that solution is neutral and if pH is more than 7 then it is basic in nature. So all these statements are correct. Mark D, all of above as correct answer. Question number 13. The pH of acid rain is, if the rainwater has pH less than 5.6 then it is called acidic rain. So correct option is A. The pH of acid rain is less than 5.6. Mark A as a correct answer. Question number 14. In a solution, at what pH the concentration of hydroxyl ion is more? pH स्केल को देखो, जब pH स्केल पर हम 7 से 14 की ओर जाते हैं तो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है एंड हाइड्रोजन आयंस कम होते चले जाते हैं. सो फ्रॉम गिवन 4 वैल्यूज ऑफ pH दैट इज 4, 8, 14 एंड 1, एट pH 14 हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी. सो mark C as a correct answer. Question 15. Mixing of an acid and base with water results in, जब एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं देन हाइड्रोनियम आयंस H3O+ का अमाउंट कम होने लगता है. सिमिलरली जब बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस OH- का अमाउंट कम होने लगता है. इस प्रोसेस को डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस भी कहा जाता है एंड दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इस प्रोसेस में. सो करेक्ट आंसर इज सी. मिक्सिंग ऑफ एन एसिड एंड बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. सो मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर. Question 16. Dash is formed when chlorine gas is passed on dry slaked lime which is calcium hydroxide. See the chemical reaction. Calcium hydroxide CaOH whole twice में क्लोरीन गैस Cl2 पास करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 एंड वाटर बनता है. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. मार्क बी. क्वेश्चन 17. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ. बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिक्स किया जाता है एंड मिक्सचर ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर. सो करेक्ट आंसर इज बी. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है एंड टार्टरिक एसिड. सो मार्क बी एज अ करेक्ट answer. Question 18. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to hard solid mass called. Plaster of Paris में water mix करने पर gypsum बनता है जिसका formula है CaSO4 with 2 water molecules. This gypsum is hard. Doctors use plaster of Paris for supporting fractured bones. So correct answer is B. Mark B. Question 19. Which one of the following statement is not correct? Statement A. Bleaching powder is used to make drinking water germ free. This is correct.
वाटर में जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट बी, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, इसका यूज़ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। दिस इज़ रॉन्ग। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट इन ड्राई कंटेनर्स। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वाटर से रिएक्ट कर हार्ड जिप्सम बनाता है। दैट इज वाई इट इज केप्ट इन ड्राई कंटेनर्स। सो आउट ऑफ 4, wrong statement is C. Mark C as a correct answer. Question 20. Use of dash on the stung area of bee gives relief. Bees acids release करते हैं which causes irritation, burning and pain. So to get relief we should use baking soda which is basic in nature and neutralize the effect of acid secreted by bees. So correct answer is A. Ma A. So that's all.